Hello everyone, this is your Bandhani Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we have discussed about the simple interest, how to calculate it and what it is, okay? And in today's session we are going to discuss the exercise, that is the last exercise of this chapter, that is 8.3. So let's start it. So question number 1 is here. Tell what is the profit or loss in the following transactions. Also find profit percent or loss percent in each case. And you have given here different 4 cases. So first case, that is here, gardening shares worth rupees 250 and sold for rupees 325. So first here we will decide what is the loss or profit by looking the CP and SP, means cost price and selling price of gardening shares. Okay, so cost price means CP, here you have given rupees 250. Okay, and the selling price you have given rupees 325. Okay, now see, here SP means selling price of the gardening shares is greater than the cost price. So it is obvious here is being profit. Okay, why? Because SP is greater than CP. It means here we are having profit. So profit is equal to selling price minus cost price. Selling price you have given 325 and cost price you have given 250. Okay, so the profit will be 75 rupees. Okay, इस क्वेश्चन में आपको CP एंड SP दे रखा है, मीन्स कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस डिफरेंट थिंग्स का आपको दे रखा है. तो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है. इस बेसिस पर आपको डिसाइड करना है कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है. ओके, तो यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस कितना 325 रुपीज़ दे रखा है, दैट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस. सो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा. एंड प्रॉफिट वी नो दैट SP माइनस CP, हाउ वी कैलकुलेट इट. सो प्रॉफिट इज 75 रुपीज़. Now we have to calculate profit percent. Okay, so profit percent is profit, P for profit. Okay, profit into 100 upon CP. Profit we have calculated as 75 into 100 upon CP. CP is 250. Okay, now this 0 will be cancelled out with this 0 and 25 1 jar 25 and 25 3s are 75, means 3 into 10 30. It means the profit percent is 30%. Okay, so while looking selling price and cost price we can decide either it is a case of loss or profit. Then we have to calculate profit percent or loss percent by putting the values in particular formula. Okay, so this was the first part. Now see the second part. The second case is a refrigerator bought for rupees 12,000 and sold at rupees 13,500. ओके, एक रेफ्रिजरेटर को कितने रुपीज़ में, 12,000 रुपीज़ में खरीदा गया. इट मीन्स कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 12,000 रुपीज़ एंड उसको सेल कितने में किया गया है 13,500. सो SP मीन्स सेलिंग प्राइस विल बी 13,500. ओके, सो CP इज हेयर rupees 12,000 and SP means selling price you have given 13,500. Okay, so you can see here SP means selling price is greater than cost price. So this is the case of profit. Here SP is greater than CP, that's why this is the case of profit. So profit is equals to SP माइनस CP. प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर SP CP से ग्रेटर है. ओके, सो वी विल सबट्रैक्ट CP फ्रॉम SP. सो SP माइनस CP मीन्स 13,500 माइनस 12,000. ओके, सो इट मीन्स 1,500. तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हो रहा है 1,500 का. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट
प्रॉफिट परसेंट, कि कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है. सो प्रॉफिट परसेंट is profit into 100 upon CP. The same formula as we have applied in first part. So profit is here 1500 into 100 upon CP. CP is 12,000. Okay, cancel these zeros. There are 3 zeros in denominator, so we can cancel out like this. Now 150 upon 12. So if we divide these two by 2, so 2 7s are 14 and 2 5s are 10, and here 2 6s are. Now we can divide it by 3. So 25 3s are 75 and 3 2s are 6. It means 12 and 1 by 2%. Okay, if you divide 25 by 2, you will get 12 and 1 by 2%. Okay, so इस केस में रेफ्रिजरेटर जिसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी 12,000 एंड सेलिंग प्राइस 13,500, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 1,500 का, और कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज 12 एंड 1 by 2%. ओके, नाउ थर्ड केस इज अ कपबोर्ड बॉट फॉर ₹2,500 and sold at ₹3,000. Okay, so here the cost price of cupboard is 2,500 means 2,500, and SP means selling price of the cupboard is 3,000. Okay, so as you can see here also selling price of the cupboard is greater than cost price. Okay, SP is greater than CP. That means here this is the case of profit. इस केस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है. क्यों? क्योंकि SP means selling price of the cupboard is greater than its cost price. Okay, so profit is equal to selling price minus cost price, and selling price is 3,000 and cost price is 2,500. That means ₹500. Okay, so profit is here 500 rupees. Now we have to calculate its percent also. So profit percent is profit into 100 upon CP. Okay, so profit is 500 rupees into 100 upon CP. CP is 2,500. Okay, so if we cancel these 0 with this 100, so 25 2s are 50, it means 20%. Okay, 500 into 100 upon 2,500. 100 के 2 जीरो से हमने 2,500 के जीरो को कैंसिल किया, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या सिर्फ बच रहा है 25, और न्यूमिनेटर में आपके पास क्या है 500. सो 25 2s are 50, इट मीन 20 टाइम्स ऑफ 25 इज 500. सो हियर वी आर गेटिंग प्रॉफिट परसेंट एज 20%. सो इन दिस केस द प्रॉफिट परसेंट इज 20%. Okay, now come to the last part. D part is here, the last case. A skirt bought for ₹250 and sold at ₹150. So here the cost of skirt is 250. Okay, and its selling price is 150. So since here SP is less than cost price, means SP is less than its cost price. Okay, that's why this is the case of loss. यहाँ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है. मीन्स हम खरीद ज़्यादा में रहे हैं और बेच कम में रहे हैं, तो हमें क्या होगा, ऑब्वियसली लॉस होगा. सो लॉस इज CP minus SP. Okay, so CP is 250 rupees and SP is 150 rupees. So 250 minus 150 is 100. तो लॉस 100 रुपीज़ का हो रहा है. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, लॉस परसेंट. जो भी लॉस हो रहा है उसका परसेंट भी निकालना है. इट मीन्स लॉस इंटू 100 अपॉन CP.
So loss is here 100 into 100 upon CP. CP is 250 rupees. Okay, so if we cancel this 0 by this 0 of 100 and 25 1 ja 20, 25 4 ja 100, that means 4 into 10 is 40. So 40% loss is here. Okay, कितना लॉस हो रहा है? 40% लॉस हो रहा है इस केस में. Okay, so that is how we decide either it is the case of loss or profit. Then we have calculated its percent. Okay, so this was your question number 1. Now come to the question number 2. Now question number 2 is convert each part of the ratio to percentage. यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में आपको रेशियो दे रखे हैं. ठीक है, रेशियो के हर एक पार्ट का आपको परसेंटेज निकालना है. ओके, सो फर्स्ट पार्ट यू हैव गिवन हियर 3:1. Here you have given ratio 3:1. So first part is this and second part is 1. So first we have to calculate the percent of first part, then percentage of second part. Okay, so see here, since we have given the ratio, so we can decide here in how many parts the thing is being divided. Okay, so since this is the ratio between 2, okay, it means here the whole thing is divided in 2. Okay, first is getting 3 parts and second one is getting 1 part. Okay, so here the total number of parts we can calculate by adding these two. Okay, so number of parts will be 3 plus 1 means 4. So anything that is to be divided in 2 having 4 equal parts. Okay, total number of parts यहाँ पर कितना है? 4 है. Okay, now we can frame here the fraction. So percentage of first part of ratio is 3 upon 4, the total number of parts. We are taking 3 parts out of 4, so the fraction will be 3 upon 4. Since we have to calculate its percentage, so we have to multiply by 100%. Okay, so we know that 25 times of 4 is 100, so this 100 can be cancelled with this 4. Okay, so 3 into 25 means 75%. Okay, so the percentage of first part of this ratio is 75%. Okay, now we will calculate this second part. So percentage of second part so first we have to frame the fraction. So 1 out of 4 means 1 upon 4 into 100%. ओके, जब भी हम रेशियो से परसेंट निकालेंगे तो सबसे पहले हमें क्या, जो भी आपको पार्ट्स दे रखे हैं उनका सम करना है टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. ओके, सो 3 + 1 इज 4. ओके, नाउ अब हर एक रेशियो के हर एक पार्ट का आपको क्या परसेंटेज निकालना, तो उसके लिए पहले हमें उस पार्ट का फ्रैक्शन पता होना चाहिए. तो फ्रैक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना 3 पार्ट्स दे रखा है आउट ऑफ 4, सो द फ्रैक्शन विल बी 3 upon 4. सिमिलरली 1 out of 4, the fraction will be 1 upon 4, and by multiplying by 100 then we can find out its percentage. Okay, so 1 upon 4 into 100, that means 100 upon 4, so it will be 25%. So this is the percentage of second part of this ratio. Okay, now see the second part. The ratio is here 2:3:5. You can see here this is the ratio among 3, means something has divided in 3. Okay, in the ratio of 2:3:5. So there are 3 parts here. First part is 2, second part is 3 and third part is 5. So
of each part we have to calculate the percentage. So for that, first we will frame the fraction. So total number of parts of ratio is 2 plus 3 plus 5 means 10. Something that has been divided in 3 in the ratio of 2:3:5. So their total number of parts will be 2 plus 3 plus 5 means 10 parts. Okay. So percent of first part of ratio will be 2. The first part is 2 times out of 10. Okay, first part is 2 out of 10. So the fraction will be 2 upon 10 into 100%. Okay, that means ये 0 इस 0 से cancel हो जाएगा. Then 2 into 10 is 20%. Okay, so the percentage of first part of this ratio is 20%. Now we will calculate for second. So percentage of second part of the ratio. It's 3 out of 10 into 100. That means 3 into 10 means 30%. Okay. Similarly, the percent of third part of the ratio means 5. Fraction is 5 upon 10 into 100. Okay. So 5 into 10 is 50%. Okay. So this is how we calculate percent of each part of any ratio. Now see the third case, that is the number C. Ratio you have given 1:4. 1:4. So the total number of parts will be 1 plus 4 means 5 parts. Okay. Now we can frame fraction of each part. So the fraction of first part will be 1 upon this 5. Since we are calculating percentage, so we have to multiply here by 100%. Okay. So this 5 will cancel this 100 20 times. So 20 into 1 means 20%. Okay. Now second part you have given of this ratio as 4. So the fraction will be 4 upon total, that is 5 into 100. Okay. So this 100 will be cancelled out by this 5 20 times. So 20 into 4 will be 80%. Okay. इस 5 से आपको 100 को कैंसिल करेंगे तो 20 टाइम्स जाएगा and 20 into this 4 will be 80%. Okay. Now see the D part. The ratio you have given 1:2:5. Here there are 3 parts of this ratio. So first we will calculate the total number of parts. So 1 plus 2 is 3 plus 5 8. So 1 plus 2 plus 5 means 8 parts. Total number of parts is here 8. So since we are calculating for the first part of this ratio, so first we will frame the fraction. So 1 upon 8. 1 upon 8 into 100%. So okay. So if we divide this 100 by 8, so we will get 88 ones are 8 and 8 twos are 16. So remainder will be 4. Okay. Remainder will be 4. It means 4 upon 8. Okay. So the percentage will be 12 and 4 by 8%. Okay. Now the second percentage of second part of this ratio. So the fraction will be 2:8 into 100%. It means 200 upon 8. 2 into 100 is 200 upon 8%. Okay. So if we divide 8, so we will get okay. So if we divide 200 by 8, we will get 25%. Okay. 25 8s are 200. That's why 25%.
नाउ द परसेंटेज ऑफ दिस थर्ड पार्ट 5/8 into 100. Okay, so 500/8. Okay, so if we divide this 500 by 8, we will get 62 and 1/2%. Okay, so this is how we calculate the percentage of ratio. Okay, now come to the question number 3. Now, question number 3 is the population of a city decreased from 25,000 to 24,500. Find the percentage decrease. ओके तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि एक सिटी की पॉपुलेशन इनिशियली कितनी थी 25,000 थी और डिक्रीज़ कितना हो गई 24,500. तो कितना परसेंट डिक्रीज़ हुआ है दैट यू हैव टू फाइंड आउट. ओके सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट हेयर हाउ मच द पॉपुलेशन हैज़ बीन डिक्रीज्ड. ओके कितना पॉपुलेशन डिक्रीज़ हुई है, फिर जितना डिक्रीज़ हुई है उसका हम परसेंट निकालेंगे. ओके सो इनिशियली पॉपुलेशन इज 25,000. ओके it has been decreased to 24,500 means decreased population is 24,500. Okay, so now we will calculate what is the decrease in population. Means decrease in population में कितना डिक्रीज हुआ है that we will calculate out by subtracting the decreased population from the initial population. Okay, initial population. So 25,000 minus 24,500. ओके हमें क्या पता है इस क्वेश्चन में कि इनिशियल जो सबसे पहले पॉपुलेशन आपको दे रखी थी कितना है 25,000, उसके बाद डिक्रीज होकर कितना हो गया है 24,500. तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे कितना पॉपुलेशन में डिक्रीज हो रहा है. तो 25,000 माइनस 24,500 मीन्स 500. पॉपुलेशन में पहले से कितना डिक्रीज हुआ है 500 का डिक्रीज हुआ है. अब इस डिक्रीज का हमें क्या निकालना है परसेंट निकालना है. सो परसेंट डिक्रीज इन पॉपुलेशन. कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में, तो उसके लिए क्या हमें पता होना चाहिए डिक्रीज इन पॉपुलेशन कि कितना हाउ मच कितना पॉपुलेशन में डिक्रीज हुआ है. ओके इनटू 100 अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन. Initial population. So decrease in population we have calculated as 500 into 100 upon initial population means 25,000. So if we cancel these 3 0 in denominator by this 2 0 of 100 and 1 0 of 500, so we will here left with 50 upon 25 means 2. So 2% of population has been decreased. Okay, कितना परसेंट पॉपुलेशन में डिक्रीज हुआ है 2%. Okay, so that was your question number 3. Now come to the question number 4. So now question number 4 is Arun bought a car for rupees 3,50,000. The next year the price went up to rupees 3,70,000. What was the percentage of price increase? अरुण ने एक कार खरीदी है और कितने रुपीज़ में 3,50,000 में. नेक्स्ट ईयर उसी कार के प्राइस इंक्रीज़ हो गए. कितना हो गया है 3,50,000 से इंक्रीज़ होकर 3,70,000 हो गया. तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो प्राइस में इंक्रीज़ हुआ है उस कितना परसेंट
प्राइस इंक्रीज हुआ है। ओके तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि प्राइस में कितना इंक्रीज है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कार। ओके सो initial cost of car is rupees 3,50,000. Okay, so initial price of the car is 3,50,000. Next year the price has increased, so increased price, next year increased price of car is rupees 3,70,000. Okay, so increase in price, प्राइस में कार के प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स 3 लाख। इफ वी सब्ट्रैक्ट द इनिशियल प्राइस ऑफ द कार फ्रॉम द इंक्रीज प्राइस ऑफ द कार नेक्स्ट ईयर, ओके दैट मीन्स 3,70,000 minus 3,50,000. ओके दैट मीन्स 20,000। कार के प्राइस में एक 1 ईयर में कितना इंक्रीज़ हुआ है, 20,000 रुपीज़ का इंक्रीज़ हुआ है। इनिशियली प्राइस कार का कितना था, 3,50,000। नेक्स्ट ईयर यही प्राइस कितना हो गया, 3,70,000। तो कितना इंक्रीज़ हो रहा है प्राइस में, दैट इज़ 20,000। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस परसेंट ऑल्सो। तो परसेंट इंक्रीज इन प्राइस, will be increased price or increase in price into 100 upon initial price. ये लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें किसी भी क्वांटिटी में इंक्रीज और डिक्रीज कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, अमाउंट ऑफ चेंज। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ चेंज क्या है कि प्राइस में कितना इंक्रीज हो रहा है। सो इंक्रीज इन प्राइस इनटू 100 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट यहाँ पर क्या है, इनिशियल प्राइस है कार का, कितना है 3,50,000। सो इंक्रीज इन प्राइस इज 20,000 इंटू 100 अपॉन 3,50,000. That is initial price of the car. Now cancel these 4 0. So we are left here with 200 upon 35. So if we divide these two by 5, so 5 4 ja 20 and 5 7 ja 35. If we divide 40 by 7, so 7 5 ja 35. That means 5 and 5 by 7%. ओके तो कार के प्राइस में 1 ईयर में कितना इंक्रीज हुआ है, 5 and 5 by 7% का इंक्रीज हुआ है। ओके so that's all for today's session in which we have discussed first 4 questions of exercise 8.3, right? If you have any query, doubt related to these question, can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to discuss next further questions of same exercise. Till then keep watching my channel. Thank you.